Hello everybody, welcome to week 2 of Research Methods and Professional Practice online course. This week we're going to be talking about how to refine your research question and also be doing some visual mapping exercises. More specifically, this video is going to be covering the following themes. We're going to be talking about the research question funnel. So this will just explain how to, what are the various steps to arrive at a more specific and narrowed down research question. We're also going to be covering what is the role and purpose of a research question and how it shapes your study in the future. And then we're also going to touch upon some strategies for locating your area of interest and talk about some ideation techniques. Now, you might be thinking why we're doing this in week 2 when we've already asked for your area of interest last week, and we've also asked you to reflect upon your themes that you're interested in. But this is something that keeps on going on throughout your research project, and so these ideation techniques will be helpful. And there might be some of you out there who need to narrow down further, and so we thought we could plug these in, and these could be beneficial for you. And lastly, we're going to tell you how to mind map the area of your study, and this is going to be really helpful in refining your research question. Okay, so first up, let's talk about the funnel. We're taking the analogy of a funnel, which is basically broad at the top and then it narrows down. And so we're using this as an example to explain how to arrive at a specific research question. So you start off with a general area of interest. These could be ideas or themes or something, and you have shared these with us, and we will be giving you feedback on them during by the end of this week. And then the next step is highlighting the knowledge gap. Now, this is very, very important. Right now, you might be interested in something, but you might discover that the area you're interested in exploring has already been exhaustively researched upon. So, you really need to fill in some kind of knowledge gap. Otherwise, you're kind of just repeating what researchers have already done already. So it's very important to highlight and identify the knowledge gap, and that kind of like forms or contributes to your problem statement. Next, you also have to kind of talk about why we need this study, why your study is important, what is the significance of this study. If you carry it out, how will it be contributing to the field? So that is also very, very important to articulate and think about. So we're not asking you to write a problem statement or a purpose statement at this point, but we're just sharing this diagram with you just so that you start thinking about these aspects. And more specifically, we're very interested in, again, the knowledge gap. And this is something that when you will do your visual mapping exercise of this week, that you will probably identify. Next is also the purpose statement. Why are you doing this study? So there is always some um, personal motivation or something that has piqued your curiosity. So it's very important to explain that also, that what purpose will your study fulfill and why is it important to you. And so these two are kind of like interlinked. Everything is interlinked. A problem statement is kind of like it articulates something, an area that you have identified that you think is underexplored, and that is basically the knowledge gap. And lastly, it is after this process that we then specifically arrive at the more focused research question. What is interesting about the funnel analogy is that it's not, you can see here we've kept the arrow both ways. So this is an iterative process. You go back and forth. You might think that in the summer you have arrived at like a fairly well structured question, but then as you will start researching, you might realize that you need to
go back and redefine and look for maybe a new knowledge gap, or redefine the purpose of your study, or reposition it in some way. So this is how this process works. So even before we get to a research question, there's these preceding thoughts and ideas that we really need to look at. And most of you have kind of I've gone through some of the worksheets that you've already sent us, and you might not be knowing this, but you have unconsciously highlighted some problems and stated your motivations for why you want to undertake your study. So you're going in the right direction. We're just here to like help you, you know, arrive at a more a well articulated research question in this course. Okay. So the next segment, I'm plugging in a video from last year, and you'll be hearing Madhya Lagari's voice, where she's going to briefly explain to you the research question and its significance. सबसे पहले वी विल कंसिडर कि एक रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है। ये रिसर्च डिज़ाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्योंकि हमें ये बताता है कि बेसिकली व्हाट दिस स्टडी विल अटेम्प्ट टू लर्न और अंडरस्टैंड। हम इससे क्या समझेंगे और क्या सीखेंगे। सेकेंडली हमारी स्टडी के पैरामीटर्स हमें बताता है कि उसका फोकस क्या होगा। द डोर्स आर नॉट स्वंग वाइड ओपन और आपके एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को काइंड ऑफ आंसरेबल बनाता है। सेकेंडली थर्डली हमें गाइडेंस देता है कि ये रिसर्च क्वेश्चन आखिर किस तरीके से इस स्टडी को कंडक्ट करवाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि एक अगर आपने रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड किया है तो उसका एक ही तरीका होगा स्टडी को कंडक्ट करने का, लेकिन नेचर ऑफ द क्वेश्चन के अंदर ये सजेशन मौजूद होती है कि वो किस किस्म की मेथडोलॉजी के साथ मेजर हो सकता है या आंसर हो सकता है। सेकेंडली एक और एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन जिस पे हम स्ट्रेस करना चाहेंगे वो ये है कि formulation of the research question may proceed or follow the development of a conceptual framework. And I would kind of include the literature review here as well. I will come back to this point kind of at the end of the presentation. लेकिन यहाँ पे हम ये stress करना चाहेंगे कि although हम आपको chronologically approach कर रहे हैं इस course में कि हमने पहले एक जनरल कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने की कोशिश की रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज के साथ, फिर हम रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम एक और स्टेज के अंदर आके मेथडोलॉजी पे आएंगे और शायद फिर एनालिसिस वगैरह पे आप जाएंगे व्हेनेवर योर थीसिस टेक्स यू देयर। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये एक इतना लिनियर पाथ नहीं होता, इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेसी होता है एक्चुअली। एंड होना भी चाहिए क्योंकि व्हाट इट डज इज़ दैट आप एक फीडबैक लूप्स क्रिएट कर रहे होते हैं जहाँ पे आप फील्ड में जाते हैं, कुछ नई चीज़ लर्न करते हैं, फिर वापस आते हैं एंड यू नो अपने वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू अपने रिसर्च क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। सो इट्स पॉसिबल कि जब आप डेटा कलेक्ट करना शुरू करें तो आपका रिसर्च क्वेश्चन उसके मुताबिक चेंज हो जाए। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि ये एक क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश नहीं है। इनफैक्ट कुछ रिसर्चर्स डोंट स्टार्ट विद अ वेरी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, but that doesn't mean they don't go prepared into the field. We will discuss this kind of later as well. Next up, we're going to be talking about how to locate your area of interest, and also some strategies for developing ideas and concepts. And you're going to be hearing the next segment in Madhya Lagari's voice, where she's also going to be touching upon visual mapping strategies. And then I'll pick up from there. सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको आप अपना कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक जो आपने एक्सरसाइज की थी रिफ्लेक्टिव वीडियो वाली, दैट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, दैट वर्कशीट कैन बी अ रियली ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल हो रही है तो हियर आर अ फ्यू सजेशंस कि सबसे पहले डायरेक्टली लुक अराउंड यू at your everyday life, at your work, at your friends, your family and within your community, within your professional circle, और आप अपने आप को असेस करने की कोशिश करें कि आपके इंटरेस्ट कहाँ पे वेयर दे लाई। सेकेंडली आप इनडायरेक्टली सोच सकते हैं कि व्हाट आर द करंट इश्यूज इन योर फील्ड। सो फॉर एग्जांपल एज आर्टिस्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान वी आर ऑफन कंसर्न विद perhaps identity या फिर medium और it can be many many other things, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इर्द गिर्द आपके
आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स किस किस्म की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, किस किस्म की चीज़ों के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं. इवन सोशल ओकेजन्स यू कैन ऑब्जर्व क्लोजली कि वर्क रिलेटेड कॉन्वर्सेशन क्या होती है. um, और इसके अंदर डिबेट्स कौन सी मौजूद हैं. तो पॉसिबल है कि आपका इंटरेस्ट इनमें से भी किसी में आता हो. थर्डली, आप इनडायरेक्टली लिटरेचर को देख सकते हैं. शायद आपने अखबार में किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रिसेंटली, या फिर आपने ऑनलाइन मैगज़ीन में पढ़ा, सोशल मीडिया पे आपके कुछ आया, या फिर आप म्यूज़ियम गए और आपने कोई एग्ज़िबिशन देखी जिसके अंदर कोई एस्पेक्ट आपको इंटरेस्ट किया. कोई पैनल डिस्कशन आपने अटेंड की, किसी ने कोई सवाल पूछा, तो ये एस्पेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा और आपने सोचा कि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे. तो all of these things, all of these experiences of the world, direct and indirect, can kind of, focus you towards your general area of interest. और अब इस जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हाउ डू यू पुट इट डाउन ऑन पेपर. आई थिंक कि आपकी एक एक्सरसाइज विजुअल मैपिंग की फॉर बोथ ट्रैक्स, न्यू रिसर्च क्वेश्चन एंड एग्जिस्टिंग रिसर्च क्वेश्चन, इस वीक में है. तो आई वुड लाइक टू एक्सपाउंड लिटिल बिट ऑन दैट कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और विजुअल मैपिंग आखिर होती क्या है. सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत सारे लोग आपके कोहोर्ट में से ऐसे हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर काम करते हैं. तो यू विल ऑलरेडी बी फेमिलियर विद दिस टेक्निक कि आप थोड़ा सा टाइम दे के अपने आप को, यू लिस्ट ऑल पॉसिबल आइडियाज़ दैट आर कमिंग टू यू. डू दिस विदाउट सेंसरिंग योर सेल्फ, विदाउट थिंकिंग कि ये आइडिया अच्छा नहीं है और इसको रिजेक्ट किया जाए. बट ऑल्सो डू दिस विदाउट बीइंग ईजिली सेटिस्फाइड. कि अगर आपको पहला आइडिया काइंड ऑफ अच्छा लगा, आपके दिमाग में क्लिक किया, तो आप वहीं पे रुक गए. डोंट डू दैट. यू नो दिस बेस्ट ऑफ ऑल कि अगर आप का पहला आइडिया बहुत अच्छा है, तो पॉसिबल है कि आपका फिफ्थ आइडिया इज़ अमेजिंग, इट्स अ शो स्टॉपर, इट्स ब्रिलियंट. सो लेट योर सेल्फ गो देयर. सो लिस्ट ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स और अपने आप को काइंड ऑफ एग्जॉस्ट योर सेल्फ वाइल डूइंग दिस. उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने जो चीज़ें लिस्ट की हैं, आप उनको फर्दर डेवलप कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और माइंड मैपिंग कर सकते हैं. माइंड मैपिंग के अंदर बेसिकली एक नोड्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और आप एरोज़ के साथ पॉइंट करके लिख सकते हैं कि ये किस तरीके से रिलेटेड हैं. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लेटर एज वेल. उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है सोचने में, तो आप फ्री एसोसिएशन कर सकते हैं कि अगर आप अपने जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट में किसी एक चीज़ के बारे में सोचें, और फिर उससे अगली चीज़ आपके दिमाग में जो पहली आती है उसको बस लिखते जाएं. लाइक लेट दिस चेन काइंड ऑफ हैपन and see where it leads you, and maybe you will find a point of interest there. Then there is a method called the Medici effect, which I really like, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको दो अनरिलेटेड आइडियाज़ आप इकट्ठे रखें और देखें कि इनके दरमियान में इंटरसेक्शन कहाँ पे पैदा होता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद मैं इंटरेस्टेड हूँ मिनिएचर के मीडियम के अंदर, लेकिन मैं ऑल्सो इंटरेस्टेड हूँ पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के अंदर. अगर इन दोनों को मैं साइड बाय साइड देखूं, तो इनके अंदर इंटरसेक्शन काफ़ी सारा है. मैं देखती हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के बारे में है. सो देन दैट काइंड ऑफ लीड्स मी इन. सो दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग टेक्निक. एक और टेक्निक जो है, दैट्स कॉल्ड रोल स्टॉर्मिंग. इट्स अ प्ले ऑन द वर्ड ब्रेन स्टॉर्म. इसके अंदर ये होता है कि आप अपने रोल को छोड़कर किसी और का रोल अडेप्ट करके सोचते हैं कि वो व्हाट देयर थॉट्स एंड देयर एक्शंस माइट बी. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीचर के एस्पेक्ट से क्लासरूम के बारे में सोच रहे हैं, उसको थोड़ी देर पीछे छोड़ के आप सोचें कि एक स्टूडेंट किस तरीके से एक क्लासरूम को एक्सपीरियंस करता है, फील करते हैं, और उनको क्या मसाइल होते हैं. तो दैट माइट लीड यू टू अनदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपने एज अ टीचर नहीं सोचा हुआ था. सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप ब्रेन कर सकते हैं. What a mind map looks like visually, I have an example. This is an artist called Andrea Greer. ये उन्होंने म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट सैन फ्रांसिस्को में शो किया था, जहाँ पे शी मेड अ काइंड ऑफ माइंड मैप बेस्ड ऑन रिसर्च ऑफ a kind of forgotten history of women in involved in contemporary and modern art.
और उसके इंस्टीट्यूशंस वगैरह किस तरह बने। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये उसकी एक डिटेल की तस्वीर है, पूरे मैप की तस्वीर नहीं है। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग दिस फर्दर बिकॉज द कंप्लीट मैप इज़ अमेजिंग कि उन्होंने कितनी इस चीज़ को डेप्थ में देखा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें ज़रा बोल्ड में हैं, उनका टाइपोग्राफी बड़ी है, तो वो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, वो ईज़िली ऑर्गेनाइज की गई हैं और आपको विजुअली बताती हैं कि ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। फिर उसके बाद सब थीम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाती हैं। कहीं पे कुछ एरोज़ के अंदर भी लेबल्स हैं कि वो किस किस्म का रिलेशनशिप है। सो दिस इज़ जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड कि आपने माइंड मैपिंग कैसे शुरू करनी है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आप इस कम्प्लेक्सिटी का माइंड मैप बनाएंगे, लेकिन दिस इज़ जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड कि ये पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर इस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। I'm going to share another example of a visual mind map that was created by one of our MA Arted students in the online course last year. This student was interested in comics, and so I'll zoom out and just to give you like an overview of how he went about mapping all his ideas and all that he knew about comics. My understanding is that most of you have already started reading literature related to your themes. This might be in the form of articles or books or peer-reviewed journal sources. So whatever you know about your area of interest, now is the time to map it out in the form of text bubbles, and really lay out all your knowledge and all the ideas that you have related to your theme. So let me just zoom in a little bit just so that we can look at this more closely. So what this student has done is that he's from the central theme of comics, he's really interested in comics as a gateway to reading and comics in the classroom. And then this is also connecting to fiction as a pedagogical tool. So, and then he's also, these are all aspects that are branching out of the central area of interest. So, these are all facets of this one topic. So he's talking about graphic novels as tools of history. And obviously, this student had read extensive literature. And even if you haven't read extensive literature, you just basically need to map out the core themes or any emerging ideas that you have related to your area of interest. And this is where this will really like help you in refining your research question. So what this student has also done is that besides the central focus on comics, he's backtracked, and then he's like kind of like traced its roots as a form of fiction, and then gone back up to, and he's like classified it as a literary genre, and so on and so forth. And अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो he's also talking about, so again, where he was talking about comics as a gateway to reading, he's also linking it to world building, imagination, and how imagination and what role language plays in informing imagination. And then what like Urdu language, English language, and then he's really thrashed it out, the Urdu comics, and then what kind of themes are being covered in English comics. So all of this, what's fascinating about this visual mapping is that it's all stemming from this central node, and it's branching out all aspects. Like, for instance, here he's kind of like covering all the kind of themes that comics cover, but they're like a subtext. Comics cover popular culture, they play a role in culture and storytelling, they can be biographical comics. And so if we go into this corner, and there's another list of themes here. How comics also push certain kind of agendas. And let's see where this arrow is coming from. So this arrow is coming from literature. So here, let me just zoom out again. He's kind of unpacked the various kinds of types of literature. There's science fiction, realistic fiction, mystery, historical fiction, and then he's connecting it back to comics. So this is a really interesting example of how to really
map out what you've read and the ideas that you've discovered in the readings. There might be new knowledge there that you've discovered and that you think you really need to now put it on paper. This will really help you refine your research question. Why am I saying that again and again? Because if there is any area that you think is underexplored, or you think that you have not discovered enough uh, information about, that presents itself as a knowledge gap. So, for instance, if this student wanted to perhaps understand, Urdu graphic comics, so maybe that was a research gap in his entire visual map. So, whatever you have read, I would suggest that what you know about your core theme and any related ideas, uh, put them on paper, connect them with arrows, try to think about relationships between ideas, and one very important thing that we want you to do, so I'm going to zoom in again, is that the text that you've read, any sources that you've read, we want you to kind of like mention them here in like maybe you could put them in the corner, so it's kind of like we know that what kind of sources are informing your visual mind map. So this is going to be a really interesting exercise. It kind of like helps you think in a more graphic manner and visualize what is important. What you think is more important can be of a bigger shape and size. What you think is a sub theme can be of a smaller size. And so, you can really design this. And this doesn't have to be made on the computer, it can be hand drawn. That's not a problem. um, as long as if it's hand drawn, it must be legible. We should be able to read your handwriting. So that's very, very important. You can read the assignment instructions to help you understand what exactly we require of you in the visual mind map. But the core components are that you have to map out core themes, emerging ideas, maybe use it as a tool to identify any knowledge gaps, something that is an underexplored area within this map and you think you need to find out more about. And we also want you to kind of like put your bibliography here, or the sources that you're consulting, you can put them here. So that's what we want you to do this week. And in the next video, we're going to be talking about theoretical frameworks and what those are and how to arrive at one. So please do watch the next video because that's also related to our assignment this week. Thank you very much.